आप सभी लोग मस्त हो, चुस्त हो, दुरुस्त हो और तंदुरुस्त हो। एक बात आई जस्ट वुड लाइक टू शेयर विथ यू, साइंस इज समथिंग which gives us vision. Okay, constantly by gaining the knowledge, right, what we understand, we get a different view to look at the things. आज हम ऐसे ही एक myth के बारे में बात करेंगे, that is mass and weight. Now you will understand कि mass and weight ये इसमें क्या myth है. तो I have a question to you, right? My question, you need to think well, okay, and then you have to respond. My question is, what is your body weight? 40 kg, 50 kg. Are you sure your body weight is 40 kg? So today we decode the difference between mass and weight, and let's proceed further, right? Now let's understand what is mass and what is weight exactly. ये जो mass होता है, that is the total matter present inside an object. For example, I'll keep it very simple. I have taken a water bottle which is filled up till this height. So I have very little matter, that is water inside. So if I take a mass of it, I'll hardly found its mass, say 150 gram or like that, gram. So mass I measure in gram or kilogram. It is smaller than gram. If it is normal, then kilogram, like that. So mass is, if I pour more matter inside, that is water, so I'll just have more mass of this bottle. So अपने बॉडी के अंदर जितना भी मैटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? मास. द टोटल मैटर प्रेजेंट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट. अभी ये मैटर किससे बनता है? वी नो एग्जैक्टली, मैटर मेड अप ऑफ व्हाट? योर एटम. तो अपने बॉडी के अंदर जितना भी मैटर है उसको हम बोलेंगे मास. सो आई जस्ट राइट ऑन अ बोर्ड, व्हाट इज द मास? टोटल मैटर प्रेजेंट इनसाइड, टोटल मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. इसको हमने क्या बोल दिया? मास बोल दिया, राइट? तो अभी ये मास है दैट रिमेन्स सेम एवरीवेयर. आप कहीं भी जाओ, आप दुबई जाओ, रिमेन्स सेम everywhere. You go anywhere or any corner of the world, you will have the same mass, right? तो जो आपने पहले आंसर किया था कि भाई my body weight is 40 kg or 50 kg, that was not your body weight, it was your body mass. तो ये 40 kg या 50 kg जो आपका मास है, you go any corner of the world or even in space, it is going to remain same, but that is not the case of the weight. तो पहले हम समझ लेते हैं कि what is exactly the weight. So weight is nothing but gravitational force acting on an object. तो since it is a force, तो ये क्या होगा? We know what is gravitational force. G, mass, product of the mass and the square of the distance between them. तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस वैरी होगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी वैरी होगा, वैसे वैसे वेट भी वैरी होगा. तो वेट कैन वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो जहां पे आपका मास हमने मान लिया सपोजिंग 70 kg है, तो द ऑब्जेक्ट विच हैज मास 70 kg, उसका वेट कितना होगा विल कंसिडर. तो हमें ये तो पता चल गया कि वेट इज डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशंस. इवन फोर्स को अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फोर्स का दूसरा फॉर्मूला भी है मास इनटू एक्सेलरेशन. सो टू फाइंड द वेट ऑन द अर्थ we are going to use this formula. So हमने क्या कंसिडर किया कि this is what your earth, okay, this is the center of the earth, and ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 70 kg, that is lying on the surface of the earth. तो the distance between object and the earth will be the radius of the earth. तो जो डिस्टेंस है इतना है, इसका मास कितना है
70 kg. Mass of the earth कितना है? What is the mass of the earth? 6 into 10 raised to 24 kg, right? Radius of the earth, what is the radius of the earth? That is 6400 kilometer. Kilometer में, right? Okay, so let's find the weight. Weight is equal to G, 6.67 10 raised to minus 11 G. Mass 1, तो ऑब्जेक्ट 1 हम उस हमें मान लेते 70 kg. Mass 2 will be the mass of the earth. It's here 6 into 10 raised to 24 upon d square or the distance square. This is kilometer. Let's convert into meter. So 6400 kilometer. 10 raised to 3000 meter, right? So this two, it would be 64 into 10 raised to 5 meter. तो इसका स्क्वायर हमें करना है. सो आई कीप इट हियर 64 10 raised to 5 and whole square. Look at the numbers well and find out the weight, right? So let's multiply. First we'll consider the powers of the 10. 10's power हम consider करेंगे. This is minus 11. This is 24. So what is left? 10 raised to 13. 24 minus 11. Okay. 6.67 into 70 into 6. Let's go for calculation, right? What is the calculation? 2745. 2745 upon. Now this calculation 64 into 10 raised to 5 ka square. 10 raised to 5 square will be 10 raised to 10, I believe. 64 ka square. You have to do it. 64 into 64 will be 4096. What is that? 4096. Now what we'll do? यहाँ एक decimal करेंगे and we'll raise this by 11. So we have 2745 divided by 409.6 into 10 raised to 11. 10 raised to 11 will go up, will become minus 11. This difference, that is 2745 409. This is task to you. Let's find it out. What is that? It is going to be 6.7. तो कितना बन गया this? This would be 6.7 आएगा and this is what? 00. तो इसका आंसर है 6.7. Minus 11 plus 13 will be 10 raised to 2. And ये क्या बनेगा? 6.7 10 raised to 2. This is actually 100. So 670 Newton. कितना है? 670 न्यूटन. तो जिस ऑब्जेक्ट का मास 70 kg था उसका वेट कितना आ गया? 670 न्यूटन. इन शॉर्ट मास को अगर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट अ वेट. अभी ये एक्सेलरेशन कौन सा रहेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन केस ऑफ अर्थ. तो अपने बॉडी मास को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली अपने को वेट मिल ही जाएगा. बट अभी एक सवाल है. अगर हम अलग अलग जगह पे जाएंगे तो ये जो G होता है, सो वी गॉट अ लिंक that weight is nothing but gravitational force is nothing but mass into acceleration. But कौन सा acceleration? Due to gravity. Now we exactly understand mass is a something which always remain constant. But ये जो G है ये vary करेगा. जैसे ये अर्थ सरफेस है, राइट? दिस इज व्हाट योर अर्थ. आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ G is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस. ऊपर जाओगे तो कम होगा. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे. एट अ हाइट 36,000 kilometer, value of G is 0. So there you will weigh as 0. तो मतलब आप you will be absolutely weightless. तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गई. मास इज अ समथिंग कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. वेट डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
which keep varying from place to place. हमें पता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा विच यू ऑल्सो नो, जिस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 670 न्यूटन है उसी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द मून विल बी 1/6 टाइम देन इट्स वेट ऑन द अर्थ। क्यों ऐसा? बिकॉज ग्रेविटेशनल acceleration of the moon is less. How much less? 1/6 time than its gravitational acceleration on the earth. तो ये भी फॉर्मूला है, तो ये by 6 हो जाएगा लगभग it would be, if I'm not wrong, into 670 it would be 1 and something like 4, right? So इतना न्यूटन है। This is how mass and weight exactly। तो मास क्या होता है? आपके अंदर कितना मैटर भरा हुआ है। एंड वेट क्या है? विथ व्हाट फोर्स अर्थ इज पुलिंग यू डाउन। ये अर्थ पे वेट हो गया। वेट ऑन द मून वुड बी विथ व्हाट एक्सेलरेशन और विथ व्हाट ग्रेविटी मून इज पुलिंग यू डाउन। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज आप वेट यू हैव अ स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर द वेट। मास मेजर करने के लिए डिफरेंट बैलेंसेस वी हैव सीन, राइट? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड ऑल दैट। सो वी अंडरस्टैंड एग्जैक्टली मास एंड वेट। लेट मी कंक्लूड द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट once again. Mass remains same everywhere, which is total matter present inside the body. Weight can vary from place to place, and that is gravitational force acting on an object, right? Mass is a scalar quantity. This is scalar, right? It depends on magnitude, doesn't depends on direction. Weight being a force is a vector quantity, also depend on direction along with the magnitude. Weight can be 0 of an object, but mass of an object can never be 0 because it's not possible to have a massless particle, right? That way. Is that done? Mass we measure in kilogram. We measure mass in kilogram. Being force, weight we measure in Newton. Now I